And ma'am, yes ma'am. She's the one who's put on this. Chunna jo laga rahi hai, just जानली proud of you, darling. Thank you ma'am. Heartfelt welcome to all the esteemed members of the school managing committee, our distinguished guests, and Hello. 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 May we now request our respected principal ma'am for a floral welcome of our worthy guests. Hello. Hello. Thank you, ma'am. And once again, Hello. Hello. welcome, sir. Welcome to Kamla Nehru Public School Annual Sports Day. name of sportsmanship students, kindly be ready. The flame that ignites courage, determination and unity. We have our school alumni with us, Master Shan Singh. We also have our present prefectorial board students in row. Master Harmanpreet Singh, Master Harnoor, a symbol of eternal flame of sportsmanship. The flame is handed over to Master Paras, head boy of the school, and Mrs. Preet Kaur, head girl of the school. Thank you to all these students and we wish them success in all their future endeavors. We shall begin with the march past. 52 students of school by our head boy Master Paras Sharma and head girl Miss Ishpreet Kaur. They are joined by house captains, vice house captains and house prefects of our three houses, Himalaya House, Shivalik House and Nilgiri House, each carrying the legacy of mountains that inspires us to stand tall and steadfast. This march past is not merely a display of coordination, but a salute to the values that defines the spirit of Kamla Nehru Public School. With heads held high and steps in perfect rhythm, our proud houses now march forward, showcasing unity, pride and perseverance. Following them is the NCC Army Wing, dressed smartly in khaki, exemplifying discipline and strength. Stepping forward with confidence and pride are the cadets of the NCC Air Wing, representing honor and commitment.
Marching gracefully behind them are our cubs and bulbuls, scouts and guides, saluting our chief guests, the dignitaries and our proud parents. And now, leading with rhythm and energy, comes our school band team. Their beats fill the air with enthusiasm and pride. Dear students, you made us proud. May we request our worthy chief guest to release balloons and dust, symbol of peace, freedom and hope, resonating with our theme, war and peace, from ruins to hope. This is the final call for the races. 100-meter flat race, grade 9 girls. 200-meter flat race, grade 12 boys. 100-meter flat race, grade 10 boys. 100-meter flat race, grade 11 girls. Inter-school relay race. All participants are requested to be ready at starting point. थोड़ा पीछे चलो जाओ 5 सेकंड तक खड़े हो जाओ Let's give them a huge round of applause. अरमान भाई आगे 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 और खींचो पीछे को चल रहा है Good afternoon, ladies and gentlemen. Our esteemed chief guest, Dr. Satya Bhushan, Associate Professor, National Council of Educational Research and Training, NCERT, New Delhi, distinguished members of the School Managing Committee,
my loving education heroes, my fellow principals, honorable guests, friends from the press, my dear parents, beloved teachers, and my wonderful students. It gives me immense pleasure to welcome you all to Kamla Nehru Public School's 16th Annual Sports Week 2025, being celebrated under the powerful and thought-provoking theme, War and Peace from Ruins to Hope. We are deeply honored to have Dr. Satya Bhushan as our chief guest this afternoon. Dr. Bhushan serves as an associate professor at NCERT New Delhi, specializing in statistics. He currently works with the International Relations Division, IRD, and has previously served in Educational Survey Division. A distinguished scholar and educationist, Dr. Bhushan has played a pivotal role in NISHTHA, the large-scale teacher training initiative jointly organized by NCERT and the Ministry of Education impacting education across India. His significant contribution to educational assessment through National Achievement Survey has provided valuable insight into students' learning outcomes, guiding national education reforms and policy directions. A part of the International Research Division, Dr. Bhushan has also represented NCERT in collaborations with UNESCO and the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, advancing initiatives in global citizenship education and peace education, values that truly resonates with today's theme. His scholarly work and research, published in NCERT journals, such as The Primary Teachers, include thought-provoking articles like Initiative for Physical Health in India, Early Mathematics and Learning Assessment, and Snakes and Ladders Since Ancient Times, all reflecting the deep commitment to holistic and meaningful education. Dr. Bhushan, we are truly privileged to have you amongst us today. Your presence enriches this occasion, one that celebrates not only athletic excellence, but also the indomitable human spirit, our shared journey from trenches to classrooms, from ruins to hope. So, at Kamla Nehru Public School, alongside academic excellence, we take immense pride in our achievements in sports. This year, 58 of our students have qualified to represent the state in various sporting disciplines, and Master Yuvraj Taiwal, Grade A, is representing India in kickboxing at Malaysia, a moment of great pride for all of us. Thanks to my physical education department, the parents and the students. It is also noteworthy that all 1,600 students from kindergarten to grade 12 participated in various track and field events, and over 510 medals and certificates were awarded. A true reflection of a commitment to participation, perseverance and sportsmanship. Through our annual sports meet, theme War and Peace from Ruins to Hope, our students send forth a simple yet powerful message: we remember the wars. We chose peace. We promise to be the whole. On behalf of entire Kamla Nehru Public School family, I extend a warm, heartfelt welcome to you, Dr. Satya Bhushan. Thank you for gracing us with your presence today. Thank you.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Kamla Nehru Public School's 16th Annual Sports Meet 2025. This year, we gather not only to celebrate strength and speed, but also the courage to rebuild, to hope and to heal. The Annual Sports Meet 2025 is not just a celebration of athletic talent, but a reminder of humanity's collective journey. From trenches to classrooms, from ruins to hope. Through the voices of soldiers, scientists, poets, children and dancers, the students of KNPS carry one message to the world. We remember the wars. We choose peace. We promise to be the hope. Our theme, War and Peace, from Ruins to Hope, reminds us that the greatest victories are not won on battlefields, but in hearts that choose compassion over conflict and peace over pride. Today, over 1,600 students unite to tell humanity's story. A story written in trenches and tears, but also in dreams, resilience, and renewal. It is experiential learning. Through music, dramatization, choreography, symbolism and storytelling, our students will take you on a journey across time. From the echoes of World War I to our message, all we are saying is, give peace another chance. Let us remember, every act we witness today is not just a performance, it is a promise. A promise that the next generation will not only remember the wars, but will also lead the world towards peace. Let the journey begin. From devastation to reconstruction. From silence to song. From ruins to hope. Another day in the trenches, mud, rats, fear. When will this end? They say the war is for glory, but what glory lies in the silence of death? World War I, the Great War, from 1914 to 1918, set the world ablaze. On one side, the Allies, Britain, France, Russia, later the United States. On the other, the Central Powers, Germany, Austria-Hungary, the Ottoman Empire. Empires toppled, millions perished. Europe's cities lay in ruins. Families broken, schools shuttered. From the ashes, we plant the seeds of tomorrow. We lost schools to the war.
But we will rebuild learning. We lost music to the guns, but we will sing again. We remember the Great War, not to glorify it, but to learn from it. From broken trenches, humanity rebuilt homes, rebuilt schools, rebuilt hope. When the world was at war and morale was low, this cheerful song, Pack Up Your Troubles in Your Old Kit Bag, reminded people that the best way to fight fear was with a smile. Today, 112 energetic students of Grade 6 bring this spirit to life through their lively and heartwarming performance. Troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. While you lose the fertilize your flag, smile, boys, and smile. What's the use of worrying? It never was worthwhile. So, pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. While you lose the fertilize your bag, smile, boys, and smile. What's the use of worrying? It never was worthwhile. So pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. While you lose the fertilize your bag, smile, boys, and smile. What's the use of worrying? It never was worthwhile. So pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. While you lose the fertilize your bag, smile, boys, and smile. What's the use of worrying? It never was worthwhile. Oh, pack up your troubles in your own kit bag and smile, smile, Some soldiers fought bravely on the front lines. Others, shaken by what they saw, turned to words for relief. Amidst the chaos and destruction, poetry became their refuge, a way to capture the pain, fear, and loss that could not be spoken aloud. World War I, the Great War. It was not only fought in the mud of trenches, it was also written in poems, in diaries, in soldiers' letters. Voices that rose from despair, yet longed for peace. Rupert Brooke, in his poem, The Soldier. If I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed. But soon, patriotism met reality. The trenches were cold, the gas attacks were cruel, and the young dreams
Gwydion murder. Gas! Gas! Quick, boys! Gas! Gas! Quick, boys! My friend, you would not tell with such high zest to children ardent for some desperate glory the old lie. It is sweet and fitting to die for one's country. Just as poet Wilfred Owen, in his poem Dulce et Decorum Est, wrote. Yet even among the ruins, voices of remembrance bloomed. Poems became poppies, symbols of hope, not hate. And here is poet John McCrae in his poem In Flanders Fields. In Flanders fields the poppies blow, between the crosses, row on row, that mark our place. And in the sky, the larks, still bravely singing, fly, scarce heard amid the guns below. Alfred, Lord Tennyson poem, Home They Brought Her Warrior Dead, touched every heart. Home they brought her, warrior dead. She nor swooned, nor uttered cry. All her maidens, watching, said, "She must weep, or she will die." Then they praised him soft and low, called him worthy to be loved, truest friend and noblest foe. Yet she neither spoke nor moved. Stole a maiden from her place, lightly to the warrior stepped, took the face cloth from the face, yet she neither moved nor wept. सैनिकों की कहानियां, कवियों के सपने, वे आज भी गूंजते हैं। वे हमें सिखाते हैं युद्ध शरीर तोड़ देता है, लेकिन शब्द आत्माओं को भर सकते हैं। उनके दर्द से हमें एक सच्चाई विरासत में मिलती है, याद रखना, शांति चुनना, हमेशा। युद्ध समाप्त हो गया और दुनिया ठीक होने लगी। खाइयों से लिखे गए पत्र प्रेम, लालसा और घर वापसी के पत्रों में बदल गए। परिवार रेडियो के पास, माताएं दरवाजों के पास और दिल यादों के पास इंतजार कर रहे थे। एक जानी पहचानी आवाज दूर से एक फोन कॉल का इंतजार कर रही थी। खामोशी और दुख से जिंदगी फिर से गाने लगी, क्योंकि सबसे अंधेरी रातों के बाद भी हंसी, संगीत और उम्मीद हमेशा लौट आती है। और इस तरह खाइयों से टेलीफोन तक, आंसुओं से धुनों तक दुनिया एक बार फिर मुस्कुराई। आज उसी युग की याद को सजीव कर रहे हैं हमारे कक्षा 8 के 95 विद्यार्थी अपने मनमोहक कदमों और भावों से इस गीत के साथ। मेरे पिया गए रंगून, किया वहां से टेलीफोन। हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। मेरे पिया, ओ मेरे पिया बेरंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया बेरंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान
दूर तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे प्रिया के रंग किया है वहाँ से मैं ली हूँ, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरी भूख प्यास में खो गए मौके मारे मौके मारे, मेरी भूख प्यास में खो गए मौके मारे मौके मारे, मैं अधूरी सी हो गई मौके मारे, मैं अधूरी सी हो गई मौके मारे, तुम बिन काजल दिलवरे परवरी बन गई मैं और झूठ, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया के रंग किया है वहाँ से पहली हूँ, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूठी सूखी भांति, खा लेते हैं जो मिल जाए रूठी सूखी भांति। आज लुंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतियों तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया के रंग किया है वहाँ से पहली हूँ, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। While Europe was drowning in the blood of trenches and battlefields, another man was busy fighting a different battle. Not with guns, but with ideas. His name was Albert Einstein. In 1914, when the Great War began, Einstein was living in Berlin. Though Germany was swept with nationalism, Einstein refused to support the war. He signed a manifesto to Europeans calling for peace, while most intellectuals supported war. Hi Einstein, what's your opinion about war? Why so many nations, so many millions should be slaughtered is something I shall never understand. War is a disease, like typhus. During and after the war, Einstein moved often, from Germany to Switzerland and later to the United States. While nations built weapons, Einstein built bridges of knowledge. His discoveries were not meant to destroy, but to explain the mysteries of the universe. In 1915, right in the middle of World War I, Einstein completed his greatest work, the general theory of relativity. It changed the way humanity understood space, time, and gravity. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. In 1919, after the war ended, a solar eclipse proved Einstein's theory correct. At a time when the world was mourning millions of lives lost, a new light of hope emerged. Science had united humanity across borders.
War brings destruction, but minds like Einstein remind us that human progress lies in peace, in discovery, in imagination. Even in the darkest times, knowledge can be a light of hope. During World War I, Albert Einstein spoke out for peace while the world was at war. He dreamed of unity and understanding among nations. Years later, John Lennon's song Imagine carried the same message. A world without war or borders, where people live as one. Both Einstein and Lennon inspired humanity to believe in peace and hope for a better world. Today, carrying forward their vision, 135 students of grade 4 and 5 come together on stage to perform a beautiful dance on this theme, a dance that celebrates harmony, love, and the dream of a peaceful world where all people live as one. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us. And the world will live as one. During the First and Second World Wars, tens of millions were displaced. They fled from bombs, persecution, and the ruins of nations.
Run! The bombs are falling! Where is my school? Where is my home? My son! My son! 1939 to 1945, the world was at war again. On one side, the Allies, Britain, the Soviet Union, the United States, China, France. On the other, the Axis, Germany, Italy, Japan. 70 million lives lost, cities reduced to rubble, families torn apart, schools destroyed, dreams silenced. But humanity rose from the ruins. 1945. The United Nations was born, so no nation would stand alone. 1948. The Universal Declaration of Human Rights, a promise of dignity for all. From destruction, we built cooperation. From war, we dreamed of peace. We will learn again. We will heal the hungry. We will rebuild together. The horrors of World War II opened the world's eyes to the need for peace and justice. Millions of innocent lives were lost, and humanity promised never to repeat such cruelty. The human rights official music video carries that same message, reminding us through powerful words and images that we are all equal and that peace, compassion and respect are the true lessons learned from the war. In this inspiring performance, 127 students of grade 11 and 12 science come together to express these values through a powerful and moving dance. From the very beginning of your life, you were born with something called human rights. It don't matter who you are, everybody here above. You got rights, we got rights. Everybody's got their human rights. You got rights, we got rights. Everybody, everyone, everywhere. Human rights. Everyone, everywhere. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Regardless of race, color, sex, or religion. No matter about your language, status, or your origin. It don't matter who you are, everybody near and far. You got rights, we got rights. Everybody's got their human rights. You got rights, we got rights. Everybody, everyone, everywhere. Human rights. Everyone, everywhere. Human rights. 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 It don't matter who you are, everybody near and far. You got rights, we got rights. Everybody's got their human rights. You got rights, we got rights. Everybody, everyone, everywhere. That's human rights. Everyone, everywhere. That's human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Regardless of race, color, sex, or religion. No matter about your language, status, or your origin. It don't matter who you are, everybody near and far. You got rights, we got rights. Everybody's got their human rights. You got rights, we got rights. Everybody, everyone, everywhere. Human rights. Everyone, everywhere. Human rights. Human rights.
After the United Nations was established in 1945 to protect peace, the world still felt the deep pain from the bombing of Hiroshima and Nagasaki. Those tragic events showed humanity the true cost of war and the need to stand together for harmony. The message of peace grew stronger, reminding everyone that only unity, compassion, and understanding can prevent such destruction from happening again. August 6th, 1945, Hiroshima. August 9th, 1945, Nagasaki. Ordinary mornings. Families at breakfast. Children on their way to school, then. In the morning found a 400-pound bomb with a destructive force of 20,000 tons of TNT mushrooming up over the stunned enemy city. To the frightened inhabitants, the end of the world had come. On the 6th of August, 1945, in the final days of World War II, the United States Air Force dropped an atomic bomb on the Japanese city of Hiroshima. In moments, two cities were reduced to ashes. Over 200,000 lives lost. Schools, homes, temples, gone. Survivors lived with scars that never healed. But from the shadows rose a prayer for peace. A little girl, Sadako Sasaki, folded cranes dreaming of recovery and healing. Her cranes became the world's symbol of hope. Japan rebuilt. Schools reopened, cities flourished again. Hiroshima and Nagasaki became global beacons, reminding us, never again. From the silence of destruction came a universal voice, peace. Hiroshima and Nagasaki taught us, humanity must walk together. Never toward war, but always toward hope. After the United Nations was established in 1945 to protect peace, the world still felt the deep pain from the bombing of Hiroshima and Nagasaki. Those tragic events showed humanity the true cost of war and the need to stand together for harmony. The message of peace grew stronger, reminding everyone that only unity, compassion, and understanding can prevent such destruction from happening again. In 1945, the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki brought unimaginable loss and suffering. Today, 95 students of grade 4 and 5 performed this act, inspired by the song Light a Candle for Peace, reminding us that even a single candle can shine hope, compassion, and a promise of a world free from violence. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world. Light a candle for me, light a candle for you, that our wish for world peace will one day come true. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle
During World War II, dictators like Adolf Hitler, Benito Mussolini, and Hideki Tojo rose to power, spreading fear and war across the world. Their thirst for control led to massive destruction and suffering. Germany, broken after World War I, longed for hope. Adolf Hitler promised jobs, pride, and a powerful future. Germany will rise again. Trust me, and I will give you glory. He will save us. But Hitler's path led only to war, persecution, and genocide. In Italy, Benito Mussolini promised greatness. He spoke of pride and power. Believe, obey, fight. Italy will rule again. Yes, we will be strong! But Mussolini's wars brought only defeat and despair. In the Soviet Union, Joseph Stalin ruled with fear. He promised progress, but silenced his own people. For progress, sacrifices must be made. Enemies will not be forgiven. Millions were imprisoned, starved, or silenced. Patriotism became terror. In Asia, Hideki Tojo led Japan into war. He promised honor, empire, and prosperity. Japan will rise as a leader of Asia. Our empire will bring greatness. He speaks of strength. He will make us powerful. But under Tojo, Japan invaded Asia, attacked Pearl Harbor, and committed atrocities. In the end, Hiroshima and Nagasaki faced unimaginable destruction. These dictators fooled their nations with false promises, fake patriotism, and propaganda. They promised pride and glory, but left their countries in ruins. The lesson is clear. A nation's strength lies not in hate or war, but in peace, justice, and truth. During World War II, dictators like Adolf Hitler, Benito Mussolini, and Hideki Tojo rose to power, spreading fear and war across the world. Their thirst for control led to massive destruction and suffering. Today, we, the 87 students of Grade 10, stand together to carry forward that lesson. Through our voices, our unity, and our hearts, we choose to heal, not hurt. There's a place in your heart, and I know that it is love. There's a place much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. There's a place where there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space.
During World War I and World War II, thousands of Indian soldiers fought bravely alongside the British forces in distant lands. Though India was still under British rule, these soldiers showed unmatched courage and loyalty on the battlefields of Europe, Africa, and Asia. They faced harsh conditions and great loss, yet their bravery and sacrifice often went unrecognized. While the world fought for freedom from dictators and tyranny, these Indian heroes also dreamed of their own nation's independence. Their courage in war became a symbol of strength and hope for a free India. विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक पंजाब के खेतों, बंगाल की नदियों, राजस्थान के रेगिस्तानों और तमिलनाडु के तटों से गए थे। किसान, छात्र, भाई, बेटे, जिन्हें घर से दूर युद्धों में बुलाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में 13 लाख से ज्यादा और द्वितीय विश्व युद्ध में 25 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने लड़ाई लड़ी। ये थी इतिहास की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना। Come forward. The king needs brave men. सेवा करोगे तो घर वालों के लिए पेंशन और जमीन मिलेगी। हमें भारत की वफादारी साबित करनी होगी। भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। कई लोग वफादारी के लिए, कुछ जीविका के लिए, कुछ परिवार पालने के लिए और कुछ मजदूरी के लिए शामिल हुए। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि उनकी सेवा से भारत को आजादी और सम्मान मिलेगा। भारतीय सैनिकों ने फ्रांस की खाइयों में, मेसोपोटामिया के तपते रेगिस्तानों में, अफ्रीका में, इटली में, बर्मा में युद्ध लड़ा। उन्होंने घुड़सवार सेना, पैदल सेना, स्ट्रेचर वाहक, नर्स और डॉक्टर के रूप में सेवा की। उन्होंने बहादुरी के लिए पदक जीते, लेकिन युद्ध के घावों को चुपचाप धोया। कुछ ऐसे नायक भी थे जिनके नाम इतिहास में चमकते हैं। पंजाब के एक ऐसे सिपाही खुदादाद खान, जो 1914 में पश्चिमी मोर्चे पर अपनी वीरता का प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय सैनिक थे, जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। और उन्होंने अंत तक लड़ाई लड़ी, जर्मन हमलों को नाकाम रखा ताकि उनके साथी बच सकें। चिंता मत करो मां, यह जमीन ठंडी है, पर तुम्हारा बेटा बहादुरी से लड़ रहा है। मैं तो बस अपने खेतों का सपना देखता हूं और उस दिन का जब मैं लौटूंगा। तोपों की गड़गड़ाहट के बीच भी मेरे कानों में मां की लोरी गूंजती है। हर गोले की आवाज पर मैं अपने गांव की घंटी सुन लेता हूँ। युद्ध की राख में भी मेरे दिल में भारत बसा है। द्वितीय विश्व युद्ध में कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के साथ सेवा करते हुए कांगो में अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने विश्व को याद दिलाया कि भारतीय विजय के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए लड़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में 70,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में 87,000 से ज्यादा। उनकी कब्रें फ्रांस, इटली, अफ्रीका, बर्मा में हैं, लेकिन उनके दिल भारत के थे। इटली में, उत्तरी अफ्रीका में, बर्मा में भारतीय रेजिमेंटों ने सैकड़ों पदक जीते, लेकिन पदकों से परे बलिदान की कहानियां भी थी। नर्सें जिन्होंने लोगों को ठीक किया, स्ट्रेचर ढोने वाले जिन्होंने गोलीबारी के बीच घायलों को उठाया, और सैनिक जो कभी घर नहीं लौटे। भारतीय सैनिकों के बलिदान ने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। उनके साहस ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय भी न्याय और शांति के पक्षधर थे। आज हम न केवल यह याद करते हैं कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया, बल्कि यह भी कि उन्होंने एक बेहतर कल का सपना क्यों देखा। इनसे ही भारत की स्वतंत्रता के लिए आवाजें उठी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को शक्ति मिली आई उन भारतीय सैनिकों से, जिन्होंने न सिर्फ
विदेशी धरती पर विजय का, बल्कि एक आजाद भारत का सपना भी देखा। भारतीय सैनिक गुमनाम पर भुलाए नहीं गए। उन्होंने युद्ध देखा, हमने आजादी पाई। उन्होंने बलिदान दिया, हमें भविष्य मिला। उनकी याद में हम शांति चुनते हैं। यूरोप की खाइयों में खुदादाद खान से लेकर नेताजी के नेतृत्व में मार्च करने वाले आजाद हिंद फौज के सैनिकों तक, संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों तक, भारत के योद्धा सिर्फ राइफलों से कहीं ज्यादा कुछ लेकर चलते थे। वे साहस, बलिदान और आजादी का सपना लेकर चलते थे। आज हम उन्हें उस चीज का सम्मान देते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा चाहत थी, शांति। और अब हमारे कक्षा 7 के 121 विद्यार्थी उन्हीं वीरों को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जोश, उत्साह और गर्व के साथ गीत ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का की गूंज में। वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ जोड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं घूमे बस्ती में। राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में। मानो के यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। सदी दियां ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? इत्थों दूर हो जाओ,
तुरंत अपना सुरक्षित स्थान लभो ते चले जाओ। वो घर छड़ के रवाना हो जाते ने। साथ सिर्फ यादां दा हुंदा है, राहां लंबियां ते पैर नंगे। आखिरकार वो शरणार्थी बन जाते ने। मैनू अपना स्कूल ते अपने दोस्त बहुत याद आ रहे ने। मैनू तां केवल अपने घर जाना है। कदे ना कदे मैं अपने माँ प्यो नू जरूर मिलांगा। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਸਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। डरो ना, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। धन्यवाद। हुण मैनू फिर तो उम्मीद महसूस हो रही है। पहला विश्व युद्ध आधुनिक इतिहास विच पहलियां वड्डियां शरणार्थी संकटां विचों एक बनिया। 12 अरब तो वध नागरिक बेघर होए। लगभग 9 अरब अपने ही देशां विच अते 3 अरब सरहदां पार होके भज्जे। केवल बेल्जियम विच लगभग 2,50,000 शरणार्थियों ने ब्रिटेन विच शरण लिया। ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 46 ਅਰਬ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਭਗ 11 ਅਰਬ ਬੇਘਰ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਅਰਬ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 198 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੀਤ ਆਈ ਐਮ ਰਿਫਿਊਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
The world has seen pain and struggle, but whenever darkness falls, new light always rises. These are our little ones. The tiny hearts of tomorrow, they bring with them something the world truly needs. We want peace. We want love. We want happiness. We will share and care. We want a happy world. These little 125 kids of kindergarten remind us the world belongs to children. Let's fill it with peace, love and joy. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we'll walk hand in hand someday. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. Vielleicht könnt ihr einmal für uns dieses Lied singen. Es geht ganz leicht. Wir fangen mit We Shall. ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੰਗਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਜੰਗਾਂ ਹਰ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਬ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਂਕ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਖੂਨ ਕੌਣ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ, ਘਰ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਮੀਦ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠੇ 60% ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਲਗਭਗ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਦਾ 37% ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ? ਯੂਰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 17% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਰੂਸ ਨੇ 38%। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ 65% ਵਧਿਆ, ਲਗਭਗ $47 ਬਿਲੀਅਨ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੰਬ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦੋ ਮੁਹੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਪੁਕਾਰ ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਅਮਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ 136 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ 9 ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਮੀਦ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੜੇ ਹਨ। Ashes of a dream. It began with voices, young and clear, Gen Z rising, casting out fear. They carried no banners, only a plan to cleanse the rot, to free their land. But revolutions fracture, bend, when darker hands reshape the end. A march for justice, fierce and pure, became a fire no one could endure. Shadows crafted with greedy eyes, turning slogans to smoke and hope to lies. They looted the shops, they shattered the glass, each stolen moment a blade through the mass. The squares once filled with songs of the young now echo with screams, with sirens unsung. Buildings collapse, their embers cry, dreams of a nation drift into the sky. Anarchy crowned, it's self-inflamed, the guilty hide behind no name. The youth who spark the righteous fight, watch thieves rewrite the song of life. Ashes remain where tomorrow stood, a kingdom of chaos carved from blood.
And in the silence after the screams, Nepal still aches for the lost of its dreams. It began with voices young and clear, Gen Z rising, casting off fear. They carried no banners, only a plan to cleanse the rot, to free their land. But revolutions fracture, bend, when darker hands reshape the end. A march for justice, fierce and pure, became a fire no one could endure. Shadows crept in with greedy eyes, turning slogans to smoke and hope to lies. They looted the shops, they shattered the glass, each stolen moment a blade through the mass. ਹਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਫ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਧਰਮੀ ਯੋਧਾ ਜੋ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਤਾਕਤ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ। 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਗੀਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਅਮਿੱਟ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਖੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਤੱਕ, ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਿਲ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਗਰਜਾਉਂਦੀ ਹੈ।
traveled through the ruins of history, the trenches of Europe, the cries of Hiroshima, the voices of soldiers, the dreams of children. Yes, a long journey. We have also seen dictators rise and fall, refugees walk with broken hearts, and the world rebuild itself again and again. And now, we, 187 students of grades 11 and 12 Commerce, end with one promise: to choose peace. Always. We choose peace, we choose hope, we choose a future without war. 1, 2, 3, 4.
ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਾ Good afternoon, everyone. Wonderful. I must request all the parents and guests to give standing ovation to dear students. Wonderful, wonderful. You make my day. And I must congratulate KNPS for my family to have such a wonderful program. बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और जो टॉपिक आपने चुना है वॉर एंड पीस फ्रॉम ड्रीम्स टू होप इज वेरी वेरी कंटेम्प्रेरी. आज की ज़रूरत है. आज के टाइम में इसके बारे में बात करना बहुत आवश्यक है. तो इसके साथ मैं मैडम परमजीत कौर ढिल्लों जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस पारुद में फेस्टिवल में कहूँगा इसको, मैं इसको एक फेस्टिवल कहूँगा, उसमें साझा होने का मौका दिया. एंड कमेटी के मेंबर्स, पेरेंट्स, गेस्ट and dear students, thank you very much for giving me this opportunity. मैं सिर्फ मुझे पता है कि बहुत देर हो चुकी है, आप सभी लोग बहुत देर से बैठे हैं. मैं एक चीज साझा करना चाहूँगा कि मैं पेरेंट्स से खासकर प्रार्थना करना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स कितना जरूरी है. आज आपने ये रियलाइज भी कर लिया होगा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी स्पोर्ट्स है. मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स सिर्फ शारीरिक शक्ति के लिए नहीं है, शारीरिक एक्सरसाइज के लिए नहीं है, बल्कि ये मनोबल को, मन को भी सशक्त बनाता है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे भी होंगे और ये बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी सिखाता है. क्योंकि वर्ल्ड ऑफ वर्ड में जब ये लोग बड़े होंगे, जब ये लोग काम पे जाएंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे तो काम आएंगे. जैसे कि टीम में काम करना, आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से टीम में काम करना, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना. हार को मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा कि हार को अच्छे से लेना सिर्फ स्पोर्ट्स में आता है, सिर्फ स्पोर्ट्स में आता है. वो ये सोच को लचीला भी बनाता है. रेजिलियंस जिसको हम कहते हैं उसको भी बढ़ावा दे. और दूसरी चीज रूल, क्योंकि हर स्पोर्ट्स में रूल होते हैं, रूल को फॉलो करना स्पोर्ट्स ही सिखाता है. मैं एनसीईआरटी के होने के नाते आप सभी को ये इन्फॉर्म भी करना चाहूँगा कि इस बार हमने स्पोर्ट्स की किताबें भी बनाई हैं और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी किताबें जरूर देखें. लास्ट में मैं एक सेंटेंस के साथ ये खत्म करना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स कैन फोस्टर रूल बेस्ड, डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल कोएग्जिस्ट. Thank you very much. Once again, congratulations to all. Thank you very much. आपका एक बेस्ट प्राइज बाकी है. कल होली डे है.
for 100-meter flat race goes to Miss Vandana. Second prize goes to Miss Akshita. Third prize goes to Miss Kaveri. I request Miss Anjali to kindly join. A big round of applause for us, for our winners. Next we have 100-meter boys from grade 10th. First prize goes to Master Paramveer. Second prize goes to Master Gurveer. Third winner is Master Vijay. Miss Rajdeep from AI International School to kindly join. A big round of applause for our winners. Next we have students from grade 11, 10 for 100-meter race. Miss Harjot Kaur secured first position, Miss Mannat secured second position, and third position is grabbed by Miss Nitika. A big round of applause to them. I request Miss Satinder to kindly join. Now we have the winners of 200-meter race from grade 12. First prize goes to Master Harmanpreet. Second winner is Master Ashdeep Singh. And third position is grabbed by Master Navtej. A big round of applause to them. I request Mr. Channa from Phagwara Headlines to kindly join. I request Chief Guest Sir to kindly join. Next we have Miss Simran Saini, Best Athlete of the year 2025-26. Give her a big round of applause. Next best athlete trophy goes to Master Lakshay. Please give him a big round of applause.
Next best is Miss Arohi. Give her a big round of applause. Now we have the winners of inter-school relay race. The first prize goes to St. Joseph Convent School. Give a big round of applause. So is Himalaya House 11,710 points, and the winner trophy for the year 2025-26 goes to Shivalik House. They scored 14,860 points. Congratulations to all very sportive. May you all stay healthy and receive more such accolades in the years to come. Sports Meet 2025-26 theme War and Peace from Ruins to Hope. It is my privilege to express my heartfelt gratitude to all who have made this day truly special. On behalf of Kamla Nehru Public School, I extend our sincere thanks to our chief guest, Dr. Satya Bhushan, Assistant Professor, Statistics, International Relations Division, NCERT, Delhi, India. Sir, your gracious presence has truly elevated the spirit of this event. Your inspiring words have filled us with motivation and have added immense value to this beautiful celebration. A heartfelt gratitude to Mr. Pankaj Sandhana, President, School Managing Committee, for his constant support, faith and guidance. Your encouragement continues to light up